बिग बॉस हमेशा 3 चीज़ों से चलता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और मेरे लिए यह बिग बॉस सिर्फ 3 चीजों से चलता है, गुड लुक्स, गुड लुक्स, गुड लुक्स। But I'm all about heart. Show me the love, make me weep, and give me the drama. बट व्हाट अबाउट ब्रेन कीर्ति? We didn't even talk about the brain. So, ओह! mastermind, anyone? What about the mastermind? There's only one mastermind I know who is known for Big Boss mastermindery, and that is the Vikas Gupta. Yeah. Vikas Gupta, this one is for you. You know the crazy thing? When I Googled mastermind of Bigg Boss, Vikas Gupta's name comes up. He's like the only one again and again and again and again. Before season 11, before Vikas Gupta as a contestant आया था, किसी को mastermind का title नहीं मिला. It was Salman Khan who said, Vikas, you are the mastermind. तू ये गेम खेल रहा है, and सब तेरे प्यादे बन के ना चल रहे हैं. So this mastermind tag stuck with him, and yes, he got a lot of fame for it. लेकिन we saw कि उसके बाद जब भी वो बिग बॉस में आया, he couldn't live up to that magic of his first outing. एक तो विकास गुप्ता जो है एंड मास्टरमाइंड, दे आर जस्ट सिनोनिमस नाउ, क्योंकि बेचारे के साथ ऐसा मास्टरमाइंड जुड़ा है कि उसके बाद द वे ही रोज एंड देन द वे ही फेल, इतने बुरे तरीके से बेचारा उसको मेंटेन नहीं कर सका. द वे ही वाज ग्रेट इन बिग बॉस सीजन 11 कि जितने अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ गेम फ्रॉम हिम. यहाँ पे एक ऐसा कंटेस्टेंट था जो अपने दिमाग से आगे गया, नॉट अपने ड्रामे से, अपनी एंटरटेनमेंट से, अपने इमोशंस को खेलते हुए. ही इज द फर्स्ट कंटेस्टेंट जिसने हमें दिखाया कि आपने दिमाग के साथ कैसे खेलेंगे. पीपल गॉट इनसिक्योर फ्रॉम हिम, क्योंकि जब आपको इतना बड़ा टैग मिल जाता है तो उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना बड़ा जरूरी हो जाता है. देन वी सॉ हिम कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन लाइक अ दामाद ऑफ बिग बॉस, कि शायद बाकियों से सीजन हैंडल नहीं हो रहे. हमने देखा वो सीजन, उसके बाद दीपिका कक्कड़ वाले में आता है सीजन 12 में, वहां पे ही इज pitted as mastermind, लेकिन he fell flat. Then again in season 13 he fell flat. In Siddharth Shukla season उसके सामने किसकी चलनी है? पारस छाबड़ा was there. And then season 14 रुबीना के सीजन में भी वो जाता है. Why? I don't know. To his credit, उसको जब ये टैग लगा, he got a great show out of it called Ace of Space, in which he presented himself as mastermind विकास गुप्ता. उसने इस टाइटल को लेके बहुत खेला है, बिकॉज एक शिल्पा शिंदे, एक अर्शी खांती, एक हिना खांती, these women were very outspoken, very loud. उनको इमोशंस, बहुत हाइटेंड इमोशंस थे इनके. गुस्सा भी दिखाना है, रोना भी है, चीखना चिल्लाना है, ड्रामे करने एक दूसरे के साथ. इसने भी किए. He showed his tears and his frustration. ये भी भागने की कोशिश में था, लेकिन इसने ये दिखाया है कि इन लोगों को लड़ने दो, मैं पीछे बैठ के देखूंगा कि ये सब क्या कर रहे हैं. मैं एक सीड डालूंगा इनके दिमाग में, and then that seed is going to germinate and grow, and then it's going to play what I want them to play. इससे पहले they didn't do this. It was all about गाली, yelling, physicality, लेकिन दिमाग से कोई सोचता नहीं था. वो जब आया था सीजन 11 में, he was like mastermind, मैं सबकी वाट लगाऊंगा. But then suddenly उसको टकराई वापस फिर से सीजन 14 में अर्शी, उसने उसकी वाट लगा दी. He threw her in the pool, और फिर वो बेचारा जो फुसकी बॉम्ब है वो हुआ दरवाजे से आउट. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी उनका स्ट्रैटेजी था, बिकॉज ये साथ में भी होते थे, फिर लड़ाई करते थे, फिर साथ में होते थे. आई फेल्ट लाइक दे वर डूइंग दिस फॉर द कैमरास. इट जस्ट डिडंट सीम दैट ऑर्गेनिक टू मी, क्योंकि आई नो कि इनकी एनिमोसिटी थी, लेकिन जो मैजिक ये अर्शी एंड शिल्पा एंड विकास का उनके सीजन में था ना, दैट नेवर गॉट रेप्लिकेटेड. बट कैन आई जस्ट से देयर वर सो मेनी इंस्टेंसेस जहां विकास ने अपने गेम के थ्रू, पूरी स्ट्रेटजी के थ्रू पूरी गेम चेंज कर दी थी. एक था टास्क, आई थिंक इट वाज इन द वेरी बिगिनिंग, मे बी वीक 2. उसमें बेसिकली 2 टीम्स थे. दे हैड टू स्टैंड देयर विद देयर चिन ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड पानी फेंको, जो करना, बेसिकली गेट देम टू मूव. उसमें ही गॉट इन अ फाइट विद पुनीश. रिमेंबर वो फिजिकल हो गया था. फिर उसको पनिशमेंट मिली थी कि यू हैव टू गो इन जेल एंड यू कैन नेवर बी कैप्टन. बट it's not like he took himself out of the game. वो जेल में बैठे बैठे he was manipulating people. Remember Love Tyagi? एक Love Tyagi था हिना खान के टीम में. He talked to Love
He got love to betray his own team. And जब उनको betrayal का पता चला, उन्होंने खेलना ही बंद कर दिया. He won the task like this. And that shows you कि इस बंदे में दिमाग है. क्योंकि mastermind, you have to have a brain. You cannot manipulate people without a brain. और एक और task मुझे याद आता है, and that was the cushion task. दो टीम्स थे, शिल्पा शिंदे वर्सेस विकास गुप्ता. शिल्पा ने उसके सारे पैसे चोरी कर लिए थे और उसने फिर उसका कोई भी क्वेश्चन अप्रूव नहीं किया. एंड फिर बाद में कहता अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए, यू नीड टू गिव मी द मनी बैक. धीरे धीरे वो मनी उसको देती रही, पर टास्क तो रद्द ही हो गया था. बट he managed to have more money than her in the end. पूरा उसका पैसा चले गया, and then he ends up with more money than her. And you know what? I always loved brainy players because it's nice to see intelligence. शिल्पा was thoroughly on up to him कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसकी बजाऊंगी. लेकिन चाहे उसने इमोशंस के थ्रू खेला हो, टास्क के अंदर जब वो उतरा, उसने दिखा दिया इन सबको कि दिस इज व्हाट आई एम. ठीक है, चाहे आप उसको स्लाई कह लो, चाहे इसको इन्फ्लुएंस करना कह लो. He was too influential. He was being criticized कि जी ये अपने प्रोड्यूसर होने की धौंस जमाता है, या लोगों को ये इस तरह से मैनिपुलेट करता है. But it worked for him big time. चाहे प्रियांक हो, चाहे विनाक्षा थी, everybody became his pawn at one point of time. उसने दिनचक पूजा के साथ क्या किया? Do you remember that? Yeah. वो दिनचक पूजा न्यू एंट्री थी और वो कोई जंगल टास्क था या कुछ था where they had to stay outside the house और धीरे करके एक दो बंदा अंदर वापस जाएगा. And no one knew what they were doing. सब एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे, dirt फेंक रहे. They didn't know how to play this game. ये विकास दिनचक पूजा को कहता इन्होंने तुझे ही नॉमिनेट करना है, because weakest performer करार करना है because you're new here, you don't have friends here. तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर क्योंकि तुझे चाहिए, इस जेल के लिए एनर्जी चाहिए होती है. It's not comfortable. सोने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता. And she listened to him and she went in and he won. So it's like it was so easy for him to just talk. वो बातों में ऐसा घुमाता था. I felt like they had no idea कि क्या हो रहा है, क्या ऊपर है, क्या नीचे है. And then this level, he tried to do it again, Odi. जब भी ये आया है seasons में, he tried to play this game. The problem is क्योंकि लोगों ने उसको देखा हुआ है. The problem is कि उसकी गेम अब original नहीं रही. उसके बाद there have been other masterminds in the seasons. तो विकास की गेम उसी पे भारी पड़ गई in the end. Arshi Khan, when she came back with him in season 14, she just ate him up like anything. People, like you said, कि knew कि जी he is mastermind, वो दिमाग चलाएगा. तो लोग अपना दिमाग चलाना शुरू हो गए थे because of him. उसकी वजह से बहुत से हमें न्यू मास्टरमाइंड्स देखने को मिल गए थे. Like you obviously said, resonating to the task is that पैसे वाला task. उसने ये हरकत जाके की थी सीजन 13 में जब रश्मि और डेवलिना के साथ वो पैसे वाला टास्क था. He took everyone's money, so वो definitely दिमाग से खेलता है. लोगों को उल्लू बनाने में वो एक्सपर्ट है, and we've seen that. वो जिस तरह से लोगों को बोलता है कि तू ये काम कर, but then पीछे से वो जाके पैसे चुराता है. That's definitely a mastermind. चोर वाला दिमाग. एक और चीज भी है, सिड नाज was basically prompted by him to Shanaz that point of time. कि जिसने आके बोला कि Sid Naz is very famous, and out of nowhere Shanaz was like मैंने Sid Naz को hit कराना है. So basically उसने अपनी mastermindry वहां भी भरपूर तरीके से दिखाई. विकास गुप्ता was the original mastermind, लेकिन उसके बाद हर एक सीजन में ऐसा कोई बंदा आया है जो अपना ब्रेन यूज करता था along with other tactics. Just in season 15 alone, हमें I think दो mastermind दिखे हैं in some respects. एक तो ये करण कुंद्रा. If you saw Karan Kundra, I know कि उसके fans हैं, उसके haters हैं, but that's the thing, you couldn't ignore him. ये बंदा from the first 1, 2, 3 weeks, जब ये जंगलवासी versus घरवासी थे ना, he had all of the jungle contestants in his मुट्ठी. ये उसने किया कि this is my team. I am their leader. बिना कहे वो leader बन गया था because he has experience in reality shows. Mentor बन के, judge बन के, जो भी है. तो उसने वो यूज किया. उसने कैसे वो मैप के पीसेस इकट्ठे किए फॉर द ट्रेल. कैसे उसने लोगों को कहा कि अच्छा तू ये करेगा, यहाँ हाइड करेंगे, जो भी है. उसने रिमेम्बर प्रतीक, शमिता और निशांत के अंदर भी उसने फूक डलवाई थी. Remember when they all went their other ways and शमिता कहती कि no, I'm going to do my own thing. He manipulated them. One of the best or most important things for a mastermind is manipulation. लोग कहते थे कि ये बैकफुट में खेलता है, पर ये नहीं लोग सोचते
कि he has the mental strength to do that. वो सिर्फ बैक फुट में इसलिए खेल पा रहा था because other people were letting him. वो प्यादों की तरह इसको भेजता था, उमर को इधर, तेजा को इधर, निशांत और तू तो मेरा फ्रेंड है, हम ऐसे हैं, तू मेरा भाई है, प्रतीक तू भी मेरा भाई है, आई एम हैप्पी फॉर यू, तू यहाँ आया है, मैं बहुत खुश हूँ. उसको पता था कैसी बात किसके साथ करनी है, किस टोन में करनी है, किस एटीट्यूड के साथ करनी है, किसके साथ वो हंसी मजाक में कर सकता है. He even played the biggest card, which was falling in love. I'm not saying ये game थी, I'm not saying ये fake था, although जब ये सीजन चल रहा था मुझे नहीं पसंद था, but people love stories, people love connections. ये तेजरन का भी अंदर आया था ना कि ये तेजरन लोग कह रहे हैं तुम दोनों को, फिर just like सिडनाज हुआ था, यहाँ तेजरन भी took off, and you saw कि तेजा was a fierce competitor. He knew कि ये भारी पड़ सकती है मेरे ऊपर, but first he used her, she used him, and they went ahead in the game. And then you had Shamita, उसके साथ भी उसने equation अच्छा रखा. So he knew कि he's a charmer, he can charm, he can play, he's smart, and that's what a manipulator does. That's what a mastermind does. Definitely, I think उसने सबको अपने इशारों पे नचाया हुआ है, especially प्रतीक for example. प्रतीक को वो बोलता है मैं तेरा mentor हूँ, तू मेरा भाई है, मुझे तुझसे प्यार है, but वो उसकी बजाता है and you don't even realize कि वो उसकी किस तरह से बजाता है. Be it kicking him up the crotch, be it other things. I think he absolutely killed it. On the other hand, like you said, yeah, he played with love. I'm not saying obviously it might be a tactic, but it is something that takes you forward in the game. Yeah. Be it other seasons like Siddharth and Shanaz, they had a love story. It was impactful. They had their fan base. Yeah. Aage chale gaye, finale tak chale gaye. Yeah. With him, his love story went all the way to the finals. So I think he absolutely killed it in this show. It's all about brain, not just about beauty. And I think he's just taken it to another level. And he has both, thankfully. Yeah. He has both, to be very honest. Yeah. I remember जब पहला episode air हुआ था, me and Kirti were like, we are team Karan. I remember the dialogue of ours. 100%. We are team Karan, mainly because of his brains. क्योंकि उसने भी वहां पे दिखाना शुरू कर दिया कि he's so ready and he was so good, he was so smooth. लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि उसने डायरेक्शन सेट कर दिए लोगों की. Everybody, चाहे वो जितनी सिंगर्स आई हुई थी, आकाशा हो, अफसाना हो, चाहे वो विधि थी, चाहे उमर रियाज था, चाहे निशांत था, शमिता के साथ उसने कैसे चलना है, तेजा थी, everybody was totally, जैसे स्पाइडर वेब क्रिएट करते ना, he was totally into that. 100%. I love that about him. मुझे लगा था शुरू के 2-3 हफ्ते उसने इतने तगड़े गुजारे and people were criticizes के ओहो मैनिपुलेशन कर रहा है, दिल से नहीं खेल रहा है, लेकिन वो दिल से ही खेल रहा था. गेम ही है, ये तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. When he was smitten by Teja, because everybody needs love. Even I used to be like, okay fine, ये क्यों हो रहा है, maybe it's not required, because they both are good looking and I thought कि दोनों बड़े sorted हो गए, लेकिन you can't stop love happening, and that too जब आप अपने closeted place में हो. लेकिन to his credit, चाहे हैरिस मेंशन के जी उसने क्रॉच को मार के ना मारा हो, ठीक है, चाहे उसने एक एक्शन वो that what do we call it, पटक देना, वो किया, बड़ा स्मूथली सब कुछ सेल किया. Even when he was with Teja, उसके अंदर भी वो अपनी मास्टरमाइंड चला जरूर रहा था. हमने बहुत से मौकों पे देखा कि वो अपनी गेम को सॉर्टेड रखने की कोशिश जरूर करता. एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम. अमंगस्ट ऑल द मास्टरमाइंड्स वी टॉक अबाउट टुडे, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लाइक ही वाज ऑल राउंडर. You can love him, you can hate him, but you cannot deny the fact that he was the mastermind of his own season. You know, Odi, लोग सोचते हैं कि सिर्फ lying, सिर्फ manipulation mastermindery है, लेकिन नहीं. He also knew कब क्या emotion दिखाना है या क्या करना है. I'm not saying कि fake था. जैसे सुनाते थे ना कि तू aggression में जा रहा है, तू negative दिख रहा है या जो भी है, कैसे वो रोता था, वहां sympathy. And then he also used to talk about his family, his struggles, कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैं अपने family के साथ ऐसा close नहीं था, मैंने इतने साल waste कर दिए, जो भी है, bully हुआ करता था, because he wants that connection with his audience. And then with Teja, he used to make sure कि तेजा उमर के साथ बुरा ना करे. He tried to keep that balance there, क्योंकि उमर के साथ उसका real connection था, and even with Teja, पर उन दोनों का नहीं था. You can only be a mastermind if you have people around you, and उसका equation सबके साथ था. लड़कियों, they were friends, भाई बना लिए, and then then girlfriend बन गई, so जो भी है connection था, उस कनेक्शन के साथ वो खेला, नहीं खेला,
whatever he did was dependent on what people were doing. अगर आप खेलने दोगे किसी को तभी वो खेलेगा ना. If you are smart, you know कि मेरे साथ गेम हो रही है, तो कभी ना कर पाता. तो उसको लोग ब्लेम करते थे कि वो पीछे बैठ के कर. You remember, you guys, when he used to sit there on the couch and just look, है ना, that look he had. उसने ये भी कहा था, I think अकाशा को, कि तेजा is a tough nut to crack, पर मैं करूंगा. You know, you could tell, like, man, how do I do this? क्योंकि अच्छी लगने लगी थी उसको. So even with the task, वो ऐसे करता था. या उमर के साथ उसने बैठ के प्लानिंग करनी, या निशांत के पास जाता था, कि या तेजा के साथ, कि you know ऐसे करना है, ऐसे करना है. अफसाना, who was such a loose cannon, वो कैसे उसको रखता था, like calm. True. Yeah. So that's the thing. And not just Afsana, कोई भी fights होती थी, कुछ भी था, they used to go to Karan. Like, what do we do? How do we solve this? Even though Karan was a hothead himself, तब भी वो उसके पास जाते थे कि कैसे sort करते हैं. So that shows that people thought he was sensible. एंड कीर्ति देखो, एक चीज बड़ी क्लियर है, उसने वो जो जंगल थीम थी, आक्रमण करने वाला वही था कि हम इनके अंदर जाएंगे, बगावत करने वाला वही था. वो गेम को पूरी तरीके से समझ चुका था, क्रैक कर चुका था, ये क्या करने वाले. दैट कैमरा टास्क, जी आपने इनको क्या क्या टास्क कराने, उसके अंदर ही वाज ब्रिलियंट एंड पीपल वर लविंग इट कि उसका दिमाग कितना चल रहा है. इवन शमिता शेट्टी वगैरह वाला, यू नो, दे वर टेकन अबैक कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ. हाउ कैन ही डू दैट. जय भानुशाली इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला बंदा उसके सामने साइड किक लग रहा था. साइड किक लग रहा था. भानुशाली को कुछ नहीं पता चल रहा था, मैं क्या करूं, कैसे करूं. वहां करण एक पे एक पत्ते फेंकी जा रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है. और उन तीनों को तोड़ने वाला ही करण था, क्योंकि उसने ये सीड डाला था विशाल के जहन में कि शमिता लुक्स लाइक अ लूज कैनन, वहां जाके इसको पकड़ो, ठीक है, ये इनसे अलग हो जाएगी, बिकॉज शी इज लाइक इंडिविजुअल एंड ऑल दैट. या तो वो सारी गेम को तरीके से समझता था, एंड दैट इज व्हाई ही इज वन ऑफ द टॉप कंटेंडर. शुरू से ही उसको अगर नंबर 1 पे रखा जाता, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट. अगर हम कहते हैं ना कि शुरू में करण वाज दिस क्रेजी मास्टरमाइंड, एंड में तो तेजा ने गेम खेल ली भाई. टुवर्ड्स द लास्ट मंथ मुझे लग रहा था कि इसी ने जीतना है, बिकॉज द होल स्टोरी वाज रिवॉल्विंग अराउंड हर. उसका प्यार, उसकी एनिमिटी विद शमिता, जितना स्ट्रांग उसका लव दिख रहा था, उतनी स्ट्रांग उसकी जेलसी या हेट्रेड या एनिमोसिटी जो भी था वो दिख रहा था. शी न्यू कि कैसे गेम अपने आले दुआले चलानी है. उसको पता था कब कैसे क्या करना है. वो अपने स्टैंड लेती थी, प्रतीक को यू नो वो पोक करती थी जैसे वो पोक करता था. सो शी वाजंट अफ्रेड टू फाइट. निशांत के साथ वो फ्रेंड्स थी, लेकिन निशांत के साथ झगड़े. विशाल के साथ फ्रेंड्स थी, लेकिन विशाल पे एक्यूजेशन की, oh I don't feel comfortable, oh I don't like this. So she knew which cards to play herself. I think तेजा ने अच्छी गेम खेली, इतनी अच्छी गेम खेली कि जिसको हम मास्टरमाइंड कह रहे थे 5 seconds ago, उसके साथ ही खेल गई. My issue is हर सीजन में मास्टरमाइंड का जब टैग आया विकास के बाद, why is it always a guy? Why not a woman? No woman used her brain. ऐसा तो हो नहीं सकता. So for me, I feel like Teja used her brain in this game. That's why she won. Yeah. So Kirti, I definitely think out of the woman, अगर सोचा जाए, तो she is the one जिसने, you know, सबकी वाट लगाई हुई है. Be it from every season, if you compare, I think she's the strongest up till date. She's thrown every single card, चाहे वो रोने धोने का कार्ड हो, फिजिकल होने का हो, इनसिक्योरिटी का हो, कि you know, I'm jealous, समीता मेरे बॉयफ्रेंड से बात क्यों करती है, आंटी तो सब पे चढ़ जाती है, those sort of dialogues. She's shown, you know what, I'm badass, I'm here to kick ass, and I think she's done it amazingly. Obviously, there's certain things about her that we didn't like, you know, बहुत negative है, बहुत bitchy है, you know, प्रतीक के साथ physical हो गई थी. There's certain aspects, but if you think about it, वो अपनी अक्ल use करती है. That's why she went ahead. She went ahead. She did that love story. It might be fake, it might be real. I can't say for sure, but I think the strategy that she used, I think उसने विकास को भी पीछे छोड़ दिया. So I definitely think it's real, guys. Season खत्म हो गया कब का, वो अभी भी एक दूसरे के साथ हैं, तो ये कनेक्शन तो real है. पर हम just ये कह रहे हैं कि सीजन में पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है. One thing she did, जब रश्मि आई थी, रश्मि ने ये तेजरन की बात की थी, और देन रश्मि के साथ ही उसको प्रॉब्लम्स हो गए. उनका 4 का ग्रुपिंग हो सकता था, and it would have been so strong, लेकिन उसने नहीं होने दिया. She didn't let another girl come in because उसको पता था कि रश्मि's loyalty is with Umar, not with me. Even she was like, ये करण के साथ लॉयल है, मेरे साथ लॉयल नहीं है. उमर के साथ क्यों उसको प्रॉब्लम थी?
क्योंकि उमर उससे लॉयल नहीं था, करण से लॉयल था, you know, so she knew कि किस बंदे के साथ मैंने कैसे करना है. That is using your brain as well. Yeah, दूर का सोचती थी वो, which Yeah. was her फायदा, and she's taken फायदा of it. That's why she won the show. Yeah. Teja was the smart ass. You loved Karan, I loved Teja, and I Yeah. was even, bashed for it. कि why is he supporting Teja? In Yeah. the middle of the season, I knew it. There was a Yeah. moment जहाँ पे वो कैप्टेंसी का टास्क आता है and she Yeah. went to Shmita. I was like, this girl is She's gonna gonna win. win. Yeah. What I loved about her initially कि she is the one who went to Karan to start the हाँ. conversation. Karan didn't go behind her. मुझे लगता तू बात करना चाहता लेकिन कर नहीं रहा है, तो मुझे लगा वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन को प्रेजेंट करी थी कि हाँ Yep. ओपिनियनेटेड होना. ओपिनियन सही या गलत होते हैं, दैट इज सब्जेक्ट टू क्रिटिक. Yeah. वट एवर शी डिड इन द शो, उसने भी अपना अपना 100% दिया. शी वॉज ऑल इन. Yep. जब वो प्यार में उतरी, पीपल लाइक व्हाई इज शी ओवर रिएक्टिंग. Yeah. बट इफ वी सी नाउ, Yep. दिस इज तेजस्वी. दिस Yep. इज व्हाट पीपल वर लविंग अबाउट इट कि हाँ वो 100%. इनसिक्योर भी होती है, उसको पता है कि मैंने क्या बात करनी है. शमिता को इशू है, खेलूंगी इसके ऊपर. प्रतीक Yeah. को ये मसला है, इसके ऊपर खेलूंगी. रश्मि आई है, वो मेरी फ्रेंड बनती थी. करण Yeah. को सपोर्ट करिए, ओके आई एम गोना गिव यू टफ टाइम नो, क्योंकि मैं Yep. तेरी जान खाऊंगी. द Yep. मोमेंट शी रियलाइजेस कि राखी सावंत वाज लाइक तू अपने लिए नहीं सोचती है, तू करण का सोच रही है. एंड देन शी वाज हाँ. लाइक ओके, इज दैट द That's केस, switch चलो बता. जी. Yeah. उसने करण को भी इस लेवल तक इस लेवल तक वो ले गई थी कि पानी में जाके जब वो स्विम करती है, डिप लेती है, उसका भी पूरा एक वीकेंड कट जाता है कि Yes. आप Yeah. इतनी मतलब वो हुई नहीं थी. Yes. और सब ब्लेम कैसे करण पे आता, ये टॉक्सिक है, ये ये टॉक्सिक टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक है. एंड मैं कहती एंड थी कि किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि व्हाट एक्शंस आर लीडिंग टू दिस रिएक्शन, वो भी तो बिल्डअप होता है ना. सो आई फील Exactly. लाइक बोथ ऑफ दीस पीपल वर यूजिंग देयर ब्रेन्स एंड लोगों को लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं कर रहे, पर सब कुछ वही कर रहे थे इस पूरे सीजन में. दे वर द वंस दैट वर मेकिंग द सीजन गो अहेड, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक सो मेनी पीपल डिडंट लाइक देम. the end leg was totally Teja's show. It She was. ate everybody. आप मास्टरमाइंड की बात करते हो, जहां करण ने आधा सीजन चलाया, Yeah. आधा सीजन फिर तेजा ने चलाया. Yeah. समझ आ रहा था कि हाँ ये लड़की को सारी चीजें पता चल गई कि मैंने गेम के अंदर क्या करना है. The day she came to know कि I am number 2 and Karan is number 1, Yup. she was like, okay, fine, I'll be in love, but I'll win, and Yeah. she's happily in love. So Yeah. both are winners for me, to be Yeah, very both are. honest. And करण Yeah. ने बार बार कहा था जीते कोई भी ट्रॉफी घर ही आनी है. एक बंदा ऐसा था जिसने अपना सीजन बिगिनिंग टू एंड चलाया है, and that was Manu Punjabi. Manu Punjabi for me has been one of the more entertaining strategic game players. वो हमेशा manipulate करता था. He knew कि कहाँ क्या कहना है और किससे कहना है. उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या थी? वो अपने आप को भी थोड़ा पीछे रख के ना मनवीर और मोना को साथ में रखने के लिए करता था. He was like ये ट्रियो हमें चाहिए और एंड तक चाहिए, और रहे भी ऑलमोस्ट एंड तक, रहे है भी. ना. And not just them trio, he made sure कि जो commoners है ना वो कभी ये celebrities के साथ जुड़े ना. He wanted to keep that line there क्योंकि उसको पता था ये commoner tag हमारे लिए बहुत अच्छा है. वो अपने टशन में भी रहता था, वो ज्यादा फिजिकल नहीं होता था. That was Manveer. Manveer was Yeah. that guy in the front and Manu was the guy in the back. जैसे मन्नू कहता था मनवीर करता था. एंड में चलो मनवीर शाइन हो गया बिकॉज ऑफ दैट, वो फ्रंट फुट पे था, लेकिन कराया सब मनु ने है. एंड मनु की ये बात खास थी. ऑन द फ्लिप साइड वहां बानी थी, वहां गौरव थे, एंड ही नेवर बिकेम फ्रेंडली विद हिम. वो कहता था मैं यहाँ अपने टीम में हूँ, वहां की मास्टरमाइंड बानी है, वो बानी चला रही है वो टीम. सो आई रिमेंबर ही हैड दिस हेल्थी कंपटीशन विद हर क्योंकि she was in full touch too. I loved Bani, लेकिन मुझे लगता था man this guy is very dangerous, and उसको ये भी पता था एंड में कि मैं जीतने नहीं वाला. So what did he do? He took that bag क्योंकि उसका दिमाग है, उसको दिख रहा था सब. एक टास्क मिला था मनु को where he had to represent स्वामी ओम कि इसने कुछ गलत नहीं किया, इसने सब गेम के लिए किया, and why he's not a दोषी, and he won that task. Yeah. Personally उसको नहीं पसंद था स्वामी ओम ने क्या किया, वो भी बहुत गुस्सा हुआ था, लेकिन जब टास्क मिला completely उसने 180 degree चेंज करके he supported him and he won that task. He is very good with words. मनु पंजाबी के अभी भी रिव्यूज आते हैं. He's brilliant. How he talks, how he thinks. He is a mastermind player. और ये उस सीजन 14 में आया था, रूबीना वाले सीजन में, as a wild card जो एंड में आए थे. सीधे आके he won the captainship.
Everyone was ready to True. make him captain. He became friends with Ejaz, Arshi, Kashmira, just like that. क्योंकि उसको भी पता है strength in numbers. ये अलग बात है कि वो सिक हो गया, उसको जाना पड़ा, जो भी है. But that just shows you वो जहां भी जाता है, he gets the game moving around him. Yeah, Kirti, I think, especially talking about season 14, जब वो एजाज खान से मिला, and एजाज खान literally became a fan of his because he knew कि वो किस तरह से बंदा है. Yes. वो आके उसके गले लगा, you know, like did that दोस्ती, because एजाज खान felt कि, you know, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ, ये मुझे आगे लेके जाएगा. लेकिन उसने सबको अपने लपेटे में ले लिया. Like you said, कैप्टन बन गया. He controlled even Nikki Tamboli's mind as well because he's like, ये तो खूबसूरत है, पप्पू है, मैं हाँ, इसको भी ये खुद ऐसे घुमाऊंगा. कर रहा था. मैं इसको भी घुमाऊंगा, सबको घुमाऊंगा. So I think he did that season. It was very limited time, but he did it amazingly. And I think that's Yeah. the great thing about him, कि वो सबको नचाते हैं उंगलियों पे. The shortcoming was कि वो mid of the season आया. अगर season 14 में he was in the beginning, he would have ran that whole show as well. Yeah, क्योंकि he वहाँ could have कोई won दिमागी it. बंदा नहीं था जो दिमाग से खेल रहा था. वहाँ सिर्फ मनु पंजाबी था. Manu was entertainment. Yes. Manu was Yeah, mastermind. fun. And Manu was good looking as well. I remember Alia Bhatt जब आई थी उस season में, she's like, I really like Manu Punjabi. And like Kirti mentioned, उसने day one से लेकर आखिर तक इतना tough competition दिया है celebrities को. Yes. And he maintained Yeah. that कि मैं अपने में रहूंगा. Yep. मोना को कैसे उसने अपने लपेटे में लिया, and they are very good friends. Yep. वो अपने friends के लिए खड़ा होता था, वो Yep. strategize करता. He was the strategic apex of that show. जहाँ बानी बहुत तगड़ी थी, बानी उसकी आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो वहां मनु मेक श्योर करता था मैं इन सबको इतना टफ टाइम दूं कि ये Yeah. सारे हिल के रह जाएं. एंड दे Yeah. वर आल्सो वेरी स्केयर्ड ऑफ हिम कि Yeah. जो मर्जी हो जाए, दिमाग तो मन्नू का है. He मनु was. पंजाबी के आज हम जब रिव्यूज देखते हैं, इतना सीखने को मिलता है. द Yes. वे ही क्रैक्स Yeah. डाउन एंटायर सीजन पे सीजन आए हैं, उसने Yes. हर एक एपिसोड को जिस तरह से ब्रेक डाउन करता है, नजर आता है कि व्हाई वी आर कॉलिंग हिम I'm a fan मास्टरमाइंड. of his. जैसे मनु पंजाबी बोलता है, I'm a fan. I think is I'm very a fan. entertaining. पत्ते की बात करनी होती है, but in an entertaining way, ताकि आप बोर भी नहीं होते, entertain भी होते हो, और सुनने को भी मिलता है कि क्या क्या है. सुनने को मिलता And है. he has the insider perspective, obviously. Like hundreds of contestants आए हैं, but not all of them can play the game. बस आए हैं और गए हैं. Everyone still remembers Manu Punjabi, so that means something. दिमाग के साथ And- खेलो and you last. And Kirti, over the time, he has made himself so relevant. जिस तरह से वो dissect करते हैं एपिसोड को, उसकी वजह से बहुत सारे चैनल खुले हैं. कि उसने जब Yeah. रिव्यू करना शुरू किया था, उसको देखा देखी में ये क्रेडिट हम उसको जरूर देंगे. Yeah. और दूसरी चीज, जब वो सीजन 14 की बात हम करते हैं, there was no mastermind in season 14. all. और उसके Yeah. आने के ऊपर लोगों की हवाइयां उड़ गई थी. हाँ. एजाज खान thought कि I'll be mastermind. Ali Goni thought मैं mastermind. God. Nobody became mastermind. जब मनु पंजाबी आते हैं, वो रुबीना को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर उनसे दोस्ती भी करते हैं. Yes. वो निकी तंबोली के लिए क्रिटिसाइज हुए थे जी कि निकी के प्यार में पड़ गया, निकी के पीछे पड़ा, लेकिन नहीं. द वे ही हैज हैंडल्ड दैट लेडी आल्सो, शी वाज अ टफ वन टू हैंडल. एंड द वे ही स्टूड अप अगेंस्ट स्वामी ओम, Yeah. राइट रॉन्ग, ही वाज वेरी Yeah. क्लियर कि ये Yeah. सही है, ये गलत है. और उसके लिए जब मनवीर अपनी दाढ़ी भी कटवाता है, तो समझ Yeah. में आता है कि ना सिर्फ वो हाँ. मैनिपुलेशन कर सकता है, Yeah. वो एक अच्छा दोस्त भी है, That which he was a proved. friendship. मुझे नहीं पता कि ये controversial pick है या नहीं है. मेरे लिए पारस छाबड़ा अपने सीजन 13 का मास्टरमाइंड था. वो भी गेम मैनिपुलेट करता था. He knew कि मैंने किस साइड अलाइन होना है, कि वो कभी इधर होता था, कभी इधर होता था. पहले वो आसिम के साथ घुल मिलता था, फिर एंड में सिड के साथ, बिकॉज उसको पता था which side is stronger at the moment, कहाँ जाना है. वो टास्क को मैनिपुलेट करता था, वो चीटिंग करता था. ये रद्द का बिजनेस भी उसने चालू किया था, आई थिंक. Yeah. वो भी सरेआम, वो बस वाला टास्क जो भी था, कैसे उसने मैनिपुलेट किया सबके सामने कि मैं चीटिंग कर सबको रहा हूँ. अंधा कर दिया उसने. बताओ, आई एम द संचालक, एवरीथिंग आई से गोज. खुले में ही वाज एंटरटेनिंग एज वेल. Abracadabra, मैं हूँ पारस छाबड़ा. He had a love angle too. ये अलग बात है कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये असली है, फेक है, क्या है. वो लव या दोस्ती जो भी है, अभी तक भी चल रही है. लोग कहते हैं कि सिड फ्रंट फुट में था. 100% वो था, लेकिन जब पारस उसके साइड पे गया था ना, he listened to पारस. पारस पीछे से उसको बताता था कैसे खेलना है, and Sid was the face. He used to go play. So once again, Paras used his trickster brain to look at strategies and make those strategies. मुझे लगता है कि उस सीजन में
brawn था both, you know, धक्का मुक्की, गाली गलौज, all of that was there. पर एक ही बंदा था जो दिमाग लगाता था, you know, who would do tricks, and tricks manipulation go hand in hand. उसकी lying भी चलती थी, लोगों को पता भी था कि ये manipulate करता है, फिर भी वो करता था, you know. So I really enjoyed Paras in his season. Kirti, he's like a firework, you know, लगा लो सब जगह आग फैल जाती है, especially like you said, कभी एक तरफ मायरा, कभी एक तरफ शहनाज, दोनों को उसने घुमाया, which was definitely I think an amazing game that he did. I think उसको देख के बाकी सब भी शुरू हो गए कि प्यार में पड़ो, प्यार चालू करो, आगे बढ़ो. I think that's what his strategy, and I love the fact that, you know, खुले में बोलता था मैं टास्क रद्द करूंगा, किसी के बाप का क्या जाता है, मैं खुले में करूंगा. I loved it. He even made Asim and Sid become enemies to an extent. You know, उसने मायरा और शहनाज का झगड़ा करवाया. You know, he's the one who did that. True. मायरा और शहनाज को उसने झगड़ा करवाया. मायरा से तो शहनाज खुले में, तू इससे बात करेगी, देख अब मैं क्या करती हूँ, उससे बात करके दिखा. He even came into season 14. रूबीना के साथ उसने गेम खेला. Devolina is over there thinking ये मेरी साइड पे है. वो रूबीना के लिए नहीं आया था, वो रूबीना के अगेंस्ट आया था, और वहां आके वो रूबीना को उसने जितवा दिया टास्क. Exactly. So he's a flip master. He's expert at that. आया था कह रहे मैं Devolina को के you know what, हम इन सब की फोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. एंड में he makes रूबीना win, Jasmine उसके अगेंस्ट. Devolina वहां पे बर्तन तोड़ रही है, राखी चिल्ला रही है. I think he just killed it, you know, सबको घुमा रहे अपने इशारे पे. So he's definitely a mastermind. I've seen him in Splitsvilla, दो Splitsvilla तो उन्होंने की हैं. So I knew कि he is a brain. और secondly, वो stand भी बड़े तगड़े लेते रहे हैं. Did I like him in Bigg Boss? Overall, I did not maybe, लेकिन ये तो credit उनको देना बनता है कि in that season, he made sure मैं लोगों को कैसे नचाऊंगा. From the stage, शहनाज was behind him कि मुझे तो पारस के साथ you know affiliation है, या मुझे ये लड़का ठीक लगा, he is a strong player. उसने उधर से ही चाम करना शुरू कर दिया था. आसन के साथ उसकी टक 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 स्टेज से स्टार्ट हो गई थी. अंदर आके ही मेड श्योर वो देखता था. शुरू में ही you know he was on रश्मि साइड, मैंने रश्मि के साथ काम किया and all that. रश्मि करते करते कब वो सिद्धार्थ की तरफ गया. and he and मनु पंजाबी, they both have one thing in common, एक तो उन्होंने पैसे उठाए. And because they knew कि शायद हम विनिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन they made sure they come out as winners. उसका डायलॉग था, मैं अपनी टर्म्स में अंदर आया हूँ और अपनी टर्म्स में बाहर गया हूँ. That was his thing. और उसने रिश्ते भी बनाए जो उसने निभाए भी. लेकिन जहां जहां उसने तीली लगाई है, he was the bot king. He made sure मैं सब टास्क रद्द कराऊंगा अगर मेरी फेवर में नहीं जा रहे. उसने लड़कियों को बढ़ा दिया था. जब पहला एक फिनाले टाइप उन्होंने यू नो धोखे वाला ये जो मॉक फिनाले करते होते हैं, रश्मि को बैर का रास्ता दिखा दिया टू सेव माहिरा. ही वाज सो क्लेवर. चाहे मुझे देवोलीना को सैक्रिफाइस करना पड़े, चाहे रश्मि को सैक्रिफाइस करना पड़े, मेरी प्रायोरिटी माहिरा है. माहिरा के साथ उसके अप्स एंड डाउन्स चले हैं, लेकिन डैम दैट मैन हैज स्टूड फॉर हिज फ्रेंड्स. एंड आई थिंक उस सीजन का वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स वही रहेगा जब सिद्धार्थ शुक्ला आरती को छोड़ के, शहनाज को छोड़ के इसको बचाता है. एंड ही स्टार्टेड वीपिंग. दैट वाज द मास्टरमाइंडरी कि मैं इतना कर चुका हूं उसके साथ कि अब ये मुझे वापस करे. यही तो है. he laid the foundation, और वो फाउंडेशन बनाई उसने, और फिर उसका ही काम हुआ बाद में. So that was amazing. See, Aarti Singh was Sid's really good friend from outside. Shahnaz, and obviously we know Sid's connection with Shahnaz. फिर भी he went and chose Paras. That shows you कि Paras ने कितनी solid game खेली थी. I know वो बैग उठा के गया था, but that wasn't a loss. That was a win for him. And secondly, वो माहिरा को पूरे सीजन में लेके आया है. If पारस ना होता, माहिरा ना होती एंड तक. Obviously, पारस was a solid contestant, लेकिन उसके सामने obviously दो epic contenders थे, सिड एंड आसम के रूप में. लेकिन पारस made his presence felt. Everyone still remembers Paras. Definitely, Kirti. I think he's the Sanskari playboy with a big brain. Big brain, a lot of brain. A lot of brain. लेकिन एक चीज तो है कि यू नो टाइटंस जब उसके सामने थे, खड़े हो गए थे स्ट्रॉन्ग के, उसको नजर आ गया आसम में वो he was very clever and very smart. He didn't you know he made sure कि मैं कुछ ना कुछ तो इस शो से जीतूं. वो सिर्फ वो नहीं जीता पैसा, he made sure कि मुझे अगला वो जो मुझसे शादी करोगी भी उसको ही मिल गया था. To be very honest, जब वो बिग बॉस 14 में आता है ना, उसको पता है देवोलीना की दुखती रख पे हाथ लगाऊंगा. देवोलीना पागल हो चुकी थी. She was like, मुझे पता था ये ऐसे करेगा. He made sure रूबीना जीते. और उसने अली गोनी को भी क्या नाम है पट्टू लगा के रखा,
जो उसका स्प्लिट्स विला से फ्रेंड था. They were Yes. Yeah. splits villains क्योंकि together in the ऑजी same season. धोनी उस चीज में खुले सांड की तरह घूमता था कि मेरी चलनी है, मैं जो चाहता हूँ वही होगा. एंड पारस आया और उसको ऐसे घुमा दूर. दिया. That was good. Yeah. And you know, एक और बंदा है जो मास्टरमाइंड की कैटेगरी में आता है फॉर मी, एंड वो भी उसने अपने सीजन में ऐसे किया था, एंड दैट इज निशांत भट्ट इन बिग बॉस ओटीटी. फॉर मी, निशांत भट्ट वाज द विनर ऑफ ओटीटी बिकॉज Yeah. मुझे लगता 100%. है निशांत भट्ट के बिना ये सीजन हो ही नहीं पाता. He was from day one to the end. उसने गेम चलाई, मूस उसके साथ वो खेला, कनेक्शन बना, अग्रीमेंट्स होते थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, प्रतीक के साथ दोस्ती हुई, वहां उसके साथ खड़ा रहा. लेकिन he always thought of his benefit. He knew कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है. उसका like decades long friend राकेश बापट, उसके साथ उसने दोस्ती नहीं निभाई OTT में. They were like दुश्मन because of Shamita. So Yeah. I just feel like he played his cards. वो entertainment की आड़ में ना दिमाग चलाता है, ये नहीं कि पै 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 बोली जा रहा है, कुछ True, सोच नहीं रहा. true. He uses his brain एंड उसने सबको घुमाया है, इधर उधर जा, तू ये कर, तू वो कर. नेहा के साथ प्रतीक की दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी. नेहा और निशांत की भी दोस्ती थी, लेकिन निशांत मेड श्योर कि नेहा नेवर केम इन द इनर सर्कल, कि मूस की जगह वो नहीं ले पाई. सो आई रियली रियली एंजॉयड निशांत इन ओटीटी. मुझे लगता है बिग बॉस में लाइक जो रेगुलर सीजन है उसमें उसने ट्राई की, तो वहां इतने लोग थे तो वो थोड़ा डामाडोल उसका हो गया, उसकी गेम. लेकिन इवन देन प्रतीक वाज द फिजिकल गाय, निशांत वाज द ब्रेन्स बिहाइंड द Brain. ट्रियो. निशांत को पता था कि मैंने प्रतीक के साथ कब अलाइन करना है, करण के साथ कब अलाइन करना है. करण के साथ तू मैं होती थी, पर एंड में वो हमेशा करण के साथ रहता था एज फ्रेंड्स अलोंग विद प्रतीक. Karan and Pratik were like loggerheads, and then he's close to Karan and he's close to Pratik. शमिता के साथ OTT में बिल्कुल ही बनी, पर Big Boss 15 में he's friends with her, so he knows how to play the game. So Kirti, this Shakuni Mama, as we know in Big Yes. Boss ODT, I think the thing that I love about him the most is कि वो honesty के साथ खेलता है. Yeah. If he's got a problem, he'll say it. मुझे तेरे से problem है. He said it to Shamita as well. Yeah. कि मेरा thought है, मेरा opinion है, मैं बकवास करूँगा. तुझे बुरा लगे या ना लगे. Yep. She even went on to do MCBC with him. उसको फर्क नहीं पड़ा. हाँ. He still stood his ground and said, you know what? तूने मुझे ये बोला, अब मैं तेरी लूँगा. He became friends with Pratik. उसके और दिव्या को जो सीन था उसमें भी फूट डालता रहा. Even अक्षरा सिंह के साथ उसने अच्छे से खेला, उसको घुमाया. She went psycho everywhere. मैं सबको बजाऊंगी, सबको सिखाऊंगी, कोई मेरे पीछे आइए वो. So he manipulated everyone. Yeah. I think he was perfect for this show. Basically, I think you know what, he's like a Zerila Nag, like he sort of his season में नाग हूँ. Yeah, I think मैं नाग हूँ, exactly, and I love that about him. Because of him, I think तेजा भी अब हमारी शेष नागिन बन चुकी है. निशांत की मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगती है, he owns everything he does on the show. Yeah. He has never denied. He has never said, oh, I didn't do it. Yeah. He does it. He does it with confidence. मुझे नहीं लगता था when he came on OTT कि शायद ये शाइन करेगा. लेकिन वहां पे आपको मूव्स के साथ पेयर किया जाता, which was very odd pair for me. That was a लेकिन very since day one, that boy made sure कि मैं एंटरटेन भी करूंगा, and he's a great entertainer. मैं सबको तगड़ा कंपटीशन भी दूंगा. People were getting so scared of निशांत एक्चुअली, क्योंकि जब भी वो नॉमिनेट होता था he was the winner. ऑडियंस चाहती थी. कितनी बार निशांत को सेव किया, क्योंकि ऑडियंस डे वन से निशांत ने कनेक्शन बना लिया था. He was the one what everyone was glued to. वो अपने गेम खेलता था, वो हंसी मजाक करता था, जो भी करता था. Every week जो भी आता था ना, everyone said Nishant and Moose, Nishant and Moose, Nishant and Moose, and it was Nishant who was leading Moose as well. True. So Nishant was brilliant. गेम के चलते उसने ऐसे ऐसे डिसीजंस भी लिए हैं जहां पे he has annoyed his loved ones, लेकिन उसका जब रियलाइजेशन भी उसको होता था तो वो जाके उनके साथ वन ऑन वन होता रहे. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम. लोगों ने उसको जब राकेश रोया एंड निशांत कैसे गया उसके पास कि I can't see him crying, and it was against his own friends. He said कि मैं इसको रोते हुए नहीं देख सकता, not. और वो गया और उसे सॉरी भी कहा कि अगर मेरी वजह से तू अपसेट है तो आई एम वेरी सॉरी. He goes, राकेश तुझे पता है कि I cannot see you cry. And that touched me so much कि हाँ ये competitors हैं, गेम खेल रहे हैं, but at the end of the day they're still people.
and feel hota hai. So that was amazing. डंके की चोट पे वो सबकी बजा लेगा, but in the end he's got a soft heart, you know, वो दिल से दोस्ती करता है. Even now उसकी दोस्ती प्रतीक के साथ मेंटेन है, बाहर उसकी मूस के साथ है, शमिता के साथ उसकी दोस्ती बन चुकी है. So he's a good friend and he takes those relationships seriously and further. जब वो सीजन चल रहा था and I was quite surprised कि ये हो क्या रहा है, how is Nishant Bhatt doing that? लेकिन when that moment came जहां पे उसने शमिता को इतना नाको नाक कर दिया that शमिता was like तू सुमड़ी में खेलता है, तू सांप है, and he was owning everything. And then she pushed the boundary कि जहां वो you know abusive language में किया, and he was like no I'm not gonna leave you. उसने बर्तन बजाए, उसने make sure किया कि I get noticed. वहां पे मेरी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी because he didn't revert it back to her. He was very clear कि okay fine you doing this, I'm gonna do it my way. और जब वो सीजन 15 में भी गया, उसने करण कुंद्रा के भी नाक में जब दम किया है, जब करण कुंद्रा called him नल्ला and he was like don't call me that. आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने जब you know पत्ते खेलना शुरू किए हैं. निशांत मेड श्योर कि मैंने शमिता के साथ क्या रखना है, मैंने क्या नाम है प्रतीक के साथ क्या रखना है, एंड ही वाज द ग्लू बिटवीन दीज टू इंडिविजुअल्स बिकॉज प्रतीक एक तरफ था, शमिता एक तरफ थी. जब स्टेज के ऊपर भी आया था सलमान खान के सामने, जो उसने शमिता को एडवाइस दी थी, दैट वाज द क्रक्स ऑफ शमिता's परफॉर्मेंस कि उसको थोड़ा अपने आप को और खोलना पड़ेगा when it comes to dealing with people, and that was the best advice Shamita could have got. Also, बेहतरीन अपने प्लेयर गेम को ऊपर रखा, जैसे वीआईपी रूम में सबसे पहले उसने अपने फ्रेंड को ही निकाला बाहर, करण को, you know, and फिर भी करण was remained his friend. जो निशांत की सबसे अच्छी बात है ना, like I said, जो भी है खुले में है, and also उसको अपने OTT में देखा, फिर बिग बॉस 15 में देखा, अब खतरों में देख रहे हैं, and maybe वो झलक में देखेंगे. I don't tire of him. मुझे देखने दो निशांत को, कहीं भी जाता है. He's like a rising star right now. एक स्पेशल मेंशन मैं लाइक डालना चाहती हूँ, वो है रोमिल चौधरी, जो दीपिका कक्कड़ वाले सीजन में था. वहां भी उसने अपनी गेम खेली है, वो दीपिका एंड श्रीशांत के अगेंस्ट खड़ा रहा, पूरे सीजन खड़ा रहा, वो एंड तक गया. एंड आई डिडंट थिंक जब शुरू हुआ था ना वो सीजन की वो एंड तक रहेगा, क्योंकि उसमें वो लाइक नमक जो कहते हैं ना, जो एंटरटेनमेंट, वो ऐसा नहीं था उसमें. बट ही वाज अ लॉयर, एंड उसने वो जो लॉयरगिरी स्किल्स है ना, उसने वो गेम में खेले. एंड ऑल्सो आई लव कि हम कह रहे थे ना कि विकास गुप्ता को वो मास्टरमाइंड का टाइटल मिला. He questioned it. He was like, ये कौन सा मास्टरमाइंड है, मैं हूँ मास्टरमाइंड. Yeah, Romil Chaudhary not only gave tough time to the you know contestant. जब विकास गुप्ता अपनी एंट्री मारते हैं, उसने विकास गुप्ता को you know मिरर दिखाया था कि भाई साहब यहाँ पे मैं हूँ. And I remember there was a moment जहाँ पे विकास thought कि he is gonna play. Romil made sure, चाहे वो बहनों को लेके मैनिपुलेट करता, चाहे वो सुरभि को लेके करता था, दीपिका कक्कड़ से उसका 1-on-1 आंकड़ा चलता ही था. दीपक के साथ उसकी क्या एसोसिएशन थी. He was you know again one of the finest players. लेकिन क्या नाम है, उसका एक लिमिटेशन डेफिनेटली रहना था because he was a bit boring. Otherwise he was a good contestant. Yeah, so Kirti, I just want to say, you know, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, and I think ये guy भी थोड़ा लंबा टिका था अपने सीजन में. लंबा भी बहुत था. लंबा था भी. He was लंबा था भी. I think for me he's like a bit of, you know, like Nikki Tamboli, because वो भी, you know, शुरू में, listen, वो भी शुरू में, you know, she was like on point with the game. वो सबकी बजाती थी खुले में. She used to show people the आईना and stuff, and she used to be like, you know, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता. And I think he's got that quality in him which took him further. But Harris, I believe कि जो रोमिल था वो भी you know पीछे रह के लोगों को आगे करता था, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो सृष्टि हो, समटाइम्स दीपक को उसने जिस तरह से you know चाबी दे के रखता था. उन्होंने जीना हराम किया था बाकी लोगों का. सूरभि को चाबी लगाने वाला वो था. वो दो बहनों में से सबा वगैरह को भी चाबी लगाने वाला यही था. श्रीशांत जैसा hot headed, you know, big personality वाला बंदा है, तो obviously Romil has a lot to live up to. तो वो big personality नहीं थी, but he used his brain and he got further in the game. Obviously he created an impact. Yeah. तो ओडी तुझे entertainment चाहिए थी, हैरिस तुझे लुक्स चाहिए थे, मुझे good looks और मुझे all heart चाहिए था, feeling, love, drama, you know, रोना धोना सब चाहिए था. And I feel like ये जो masterminds है ना, इन्होंने सब दिया है. Some a little more on one category than the other, लेकिन brain सबने use किया है, and we enjoyed that, क्योंकि अगर किसी game में कोई brain ना use करे तो उस game का क्या फायदा? It was really boring. That is the end of our video today. Please comment में बताओ who was your mastermind. Do you agree with our picks? Let us know, and also follow us on social media. On Twitter and Instagram, I am Pari602. OD is
Odis underscore Insta 18. And Harris is. I am Harris_16. There you have it. Like and share and comment and subscribe, and we'll see you next time. But Kirti, Karan is beauty with brains, so I like him. Karan is beauty and brains, like Yeah, true. 100%. They got full 100%. package, and I don't know why the people didn't like me liking him. What's not to like?